So as deliberations continue in New Delhi, what's the mood like in Dehradun? Bharti Saklani from News18 India is joining me live from the Bharatiya Janata Party office in Dehradun. Siddhant Mishra is also standing by for reports from Delhi. But Bharti, पहले आपके पास आते हैं. आज क्लियर हो जाएगा कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और इस वक्त क्या वहां पे आपको सेंस मिल रहा है कि क्या अभी तक डिसीजन ले लिया गया है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे या सस्पेंस अभी भी बरकरार है? देखिए, सस्पेंस अब भी बरकरार है। 5 बजे का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि 5 बजे से शुरू होगी विधानमंडल दल की बैठक और उसके बाद ही तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वक्त बीजेपी ऑफिस में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि जैसे जैसे विधायक यहाँ पर आए और इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और वो यहाँ पर बस इंतजार हो रहा है कि विधानमंडल दल की मीटिंग जो है वो शुरू हो। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में, देहरादून में, और यहाँ पर अब थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ भी पहुंचेंगे बीजेपी ऑफिस में और उसके बाद जो मीटिंग शुरू होगी उसके बाद ही यहाँ पर तय हो पाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन है। कई नाम यहाँ पर रेस में है, जैसा कि आपने भी अभी बताया। रितु खंडूड़ी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम कहें तो अनिल बलूनी का नाम जो है वो चर्चा में है। सुरेश भट्ट का नाम यहाँ पर चर्चा में है। पुष्कर धामी दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, उनका नाम भी यहाँ पर जोर शोर से चल रहा है। लेकिन ये तमाम सस्पेंस अब भी बना हुआ है और उसके लिए इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है 5 बजे का, जब मीटिंग यहाँ पर शुरू होगी और उसके बाद डिक्लेयर होगा कि कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। जी, बने रहिएगा भारती। मैं सिद्धांत को भी इस कॉन्वर्सेशन में ऐड करती हूँ। सिद्धांत, you heard our colleague reporting from the ground there. The names that are doing the rounds, Anil Baluni is also a name that she mentioned. We've also spoken about the former Chief Minister, Mr. Khanduri's daughter being in the race. There are BJP, office bearer, senior leaders of the Bharatiya Janata Party, like Ajay Bhatt, a cabinet colleague, MOS, also Satpal Maharaj. So heavyweights there. Can you just help us understand the pros and cons for each of these candidates whose names seem to be in the fray for the Chief Minister's chair? Well, yes, Anil Baluni is a very, responsible name from the state of Uttarakhand. He's somebody who has always been taking part in the political developments that are taking place in the Uttarakhand. But this time, his name is also being considered for the post of CM-ship because of his obviously close proximity with the senior leadership here in BJP and also his hold on party cadre back in Uttarakhand. So he's also one of the contenders. But the problem with him is that his Rajya Sabha tenure is still pending. So that is also being considered that for that he has to vacate his Rajya Sabha seat, then contest election from one of the safe seats in Uttarakhand to enter House, as Uttarakhand is not a bicameral setup. Then is Pushkar Dhami, the incumbent Chief Minister, the caretaker Chief Minister. He has lost his election. For him also the problem is same, that party has to find a safe seat for him and make sure that he wins that seat and then enter House to retain the seat of CM. Other than these two names, there are other regional leaders of Uttarakhand. Ritu Khanduri is there, Ganesh Joshi is there. Then with that we have Trivinder Singh Rawat has refused, that he is not in race. Madan Kaushik, who is the party president, he is also very much in the race. So these are some possible names which are in the race at this point in time. But Anil Baluni and incumbent Chief Minister Mr. Dhami's name these are the two front runners for the post of Chief Minister. Now also this time BJP has decided to keep the method of announcing the name of Chief Minister the way they did in Gujarat. So this is going to be a surprise for the people of Uttarakhand and also whole of the country. The name is not going to be announced before the CLP meet. It is going to be announced in CLP meet by Rajnath Singh. We are already playing the visuals of Rajnath Singh, Prahlad Joshi, Mr. Nishank and other state leadership have just arrived in Dehradun for CLP meet, and at around 6:30 this particular meeting will take place, in which CM
face will be announced. Now, from some time... Just give me a moment. You just said that, senior leaders have started arriving in Dehradun. Bharti is there. Let me bring her into the conversation. Bharti, since जो senior observers है भारतीय जनता पार्टी के, वो वहाँ पहुँच गए हैं. इस वक्त आपके आसपास क्या माहौल है, क्या दिख रहा है, कोई इंडिकेशन है? बहुत सारे नाम ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कंसिडर किए जा रहे हैं, बट कोई इंडिकेशन है कि टॉप 2 या टॉप 3 कौन है? देखिए, आपने पूछा कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं, और पार्टी ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, और इस वक्त का जो माहौल है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भरे पड़े हैं. इसके अलावा मीडिया का जमावड़ा, क्योंकि सभी इस बात का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार कौन होगा उत्तराखंड का अगला सीएम. इसके अलावा पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं. राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए मदन कौशिक यहाँ पर पहुंचे थे. साथ ही साथ बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो वहाँ पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे. उसके बाद ये सीधे एक निजी होटल में जाएंगे, वहाँ पर डिस्कशन चलेगा, और उसके बाद इनके बीजेपी ऑफिस में ही आने का कार्यक्रम है. जब ये मीटिंग शुरू होगी उसके बाद डिक्लेयर होगा कि कौन उत्तराखंड का अगला सीएम है. पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ता है, और इस बात सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कौन होगा वो नाम. टॉप 3 नाम की आपने बात पूछी, इसमें सबसे पहले अगर हम नाम लें तो कार्यवाहक सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, एक वो नाम है. दूसरा अनिल बलूनी का नाम है. तीसरा यहाँ पर नाम ऋतु खंडूड़ी का भी यहाँ पर चल रहा है, वो भी इस रेस में है, और उनका नाम भी यहाँ पर इस लिस्ट में है. इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो कि जिसमें सुरेश भट्ट का हम जिक्र कर ले, वो भी सीएम की रेस में यहाँ पर चल रहे हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्पेंस अभी बरकरार है यहाँ पर, और इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि जैसे विधानमंडल दल की मीटिंग यहाँ पर शुरू हो उसके बाद वो एक नाम यहाँ पर डिक्लेयर हो कि कौन उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री है. जी, Bharti, Siddhant, I'll request both of you to stay on. I'm also bringing in our political editor Maria Shakil into the conversation. Maria, both our colleagues have been listing out who the top contenders are and what are their advantages and disadvantages. They will specifically talk to us about Pushkar Dhami. He's the man who seems to have gotten Bharatiya Janata Party back into the race at a time when it was being said that Congress could dislodge the Bharatiya Janata Party. He has lost the election, but there are MLAs who have said they are willing to vacate their seat for Pushkar Singh Dhami to recontest. How do you think in BJP's scheme of things, is this a possibility? Will it be considered? Certainly is the big dilemma for the BJP top brass, and over the last few days, Arunima, top leaders of the party, BJP President, Home Minister Amit Shah and other leaders have been holding multiple meetings which have been going late into the night, is what I can say with certainty. Now, what is the dilemma that the BJP leadership has? What kind of precedent will it set if a chief minister who has lost an election returns as the chief minister, when there are enough MLAs from whom the BJP can choose as a potential head of the legislature party? Because the BJP feels that if that is the case, then they have to answer to what will happen to Keshav Prasad Maurya in the neighboring state of Uttar Pradesh. Deputy Chief Minister who lost from Siratu constituency, but he is a member of Legislative Council because UP has a bicameral legislature. Right. In the case of Uttarakhand, that is not the case. But Pushkar Dhami himself has been in Delhi for the last 1 week, Arunima, and he has been trying to lobby hard for that position, saying certainly that in the last few months he did position the party and of course himself as a chief minister who should be taken seriously. But because it's one of the youngest states in the country, and that is the reason why the BJP understands the nature of the mandate that it has got. Almost 2/3 of the mandate, Arunima, and that is the reason why there is a lot of thought that has gone into it. And when Rajnath Singh chairs attends that legislature party meeting which will begin in another 45 minutes, he would be carrying the name that the central leadership has chosen. There are a number of names that you have also flashed on our television screens. Will Dhami get another term? But the big question is the precedent that it will set. If that is the case, then be prepared. Perhaps Keshav Prasad Maurya also returns as the Deputy Chief Minister.